I have lived some 25 years in Finland. Finland is by population, it's a very small country, but by area, it's almost equal to Balochistan. And it excels in, education system, one of the best education systems they have built. And it hasn't come about simply by wishing, but people in Finland have already in 60s, तकरीबन 60 जे ॾहाके खां पोइ उन वक़्त खां अॻु में जॾहिं हू फिनलैंड असां वांगुरु हिकिड़ो ग़रीब मुल्क हो त उन्हनि पंहिंजे मुल्क खे बहितर करण जे लाइ हिकिड़ा अहम फ़ैसिला कया. One of these decisions was to invest in human mind. They came to a conclusion that Finland doesn't possess any significant natural resources like oil or gas or gold or whatever. The only natural resource they had was forest, and they used it well. From the forests, they utilized the wood and they created a industry of paper. They exported it, but they saw that this is not enough. उन्हनि ॾिठो त इहो पूरो न आहे, इन मूं मुल्क जी पूरत न पवंदी. इन करे उन्हनि कोशिशि कई त हिकिड़ी शइ जेका हुननि वटि वॾे पैमाने ते आहे उहा आहे इंसानी दिमाग़, ऐं उन में लागत कनि, उन में इन्वेस्ट कनि. They invested in human brain, and this film is in a way a result of what they have done. During this period, many in the political circles of Finland didn't really want to invest full in education. It needs a lot of money, resources, attention to try to improve the education and so that the humans who live there, they achieve at every stage. इने लागत खां पोइ जॾहिं 80-90 वारे ॾहाके खां पोइ दुनिया में टेस्ट करण जा सिस्टम डेवलप थिया त एजुकेशन जे सिस्टम खे कीअं टेस्ट कजे, उन लाइ 3-4 अल्टरनेटिव क़िस्म जा सिस्टम साम्हूं आया. Already in 90s, early 2000, world was trying to make its testing of different education systems, and there came about several testing systems. One of these is called PISA, P-I-S-A, and other is called TMSS. And Finland has performed quite well in both of these testing systems. For about 10 years, up to 2008 or 9, when this film was made, Finland was in the first 2 or 3 of the about 40 or 50 countries who were participating. And all the industrialized countries in the world, including the richest ones, were participating in it. And since 2009, they have continued to be in one of the top 5 slots on all these. So let's see the film. And once we see it, I will try to present a few facts in a more, constructed way. And then you'll be able to put questions, ask questions. And I hope that it will give you a good impression of what has been done and what we can do in our own country. Thank you.
हाईलाइट करना चाहता हूँ जो मैंने समझी इसमें। ट्रस्ट तो आखिर में इन्होंने ट्रस्ट पे बड़ा फोकस किया था, लेकिन मैंने सोचा मैं इनको बता दूँ फिनलैंड वालों को कि जितना हम लोग इस यूनिवर्सिटी में एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं शायद फिनलैंड वाले भी नहीं करते। हम अपने स्टूडेंट्स पे ट्रस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स हमारे टीचर्स पे ट्रस्ट करते हैं, हम अपने पूरे सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम उस लेवल पे शायद अब भी ना हो। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड वी विल बी डेवलपिंग द ट्रस्ट। लेकिन ट्रस्ट की जो बुनियादें होती हैं वो बुनियादें को मजबूत करना, दैट विल मेक इट परमानेंट, दैट विल गिव इट द परमानेंस। वो ये होता है कि every one of us is working with sincerity of purpose। सबसे पहले ये होता है कि हम इस पे यकीन हो जाए कि हम जो भी जिस बंदे को काम देते हैं वो उसमें बहुत ही सिंसियर है। आउटपुट पे हम फोकस नहीं करते। आउटपुट कमज़ोर भी हो सकता है, हाईएस्ट क्लास का भी हो सकता है, वर्ल्ड रैंकिंग का भी हो सकता है, फेल्यूर भी हो सकता है, उससे कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन इस पे ज़रूर होता है जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो अपने अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे होते हैं। हमारे स्टूडेंट भी कर रहे होते हैं, उससे ही हमने विनिंग की है। पूरे पाकिस्तान में हमने विनिंग्स की हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने पोजीशंस लेते रहे, जहाँ जाते हैं पोजीशन लेके आ जाते हैं। वो पता नहीं है कि वहाँ पे कोई धागे फीने करते हैं या कुछ काम करते हैं, लेकिन पोजीशंस विन करके यहाँ पे ज़रूर आते हैं। मैं सिर्फ एक दो चीज़ें जो मैंने इसमें देखी कि फिनलैंड वाज फोकसिंग ऑन कल्टीवेटिंग द माइंड, कि इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो माइंड की मैच्योरिटी पे हो रही है। इन्वेस्टमेंट स्किल्स पे नहीं हो रही। माइंड की कल्टीवेशन का मकसद है टू बिल्ड द थर्स्ट फॉर लर्निंग। हम ज़्यादा सीखने की थर्स्ट जो है वो बिल्ड करें, उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। फिनलैंड में एजुकेशन सिस्टम पे मेनली जो है वो उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। दूसरी बात जो मैंने देखी वो ये थी कि फिनलैंड का पूरा एजुकेशन सिस्टम उस ज़ुबान में है जो ज़ुबान सबको आती है, या ज़ुबान पे जिस सबको कमांड है। जो हमारे पास इसमें थोड़ा मसला है कि हमने इंग्लिश में ही पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उस तरफ जा रहा है जिस पे हमने बाद में जाके देखना भी है, काम भी करना है। तो ये जो चीज़ें हैं कि भाई वो उसी ज़ुबान में, जिस ज़ुबान में सब समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं, टीचर भी समझते हैं, डेप्थ तक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसी पे वो जो है वो करते हैं। और इसके अलावा जो मैंने इसमें जो कुछ चीज़ें जो है मैंने सीखी हैं कि टीचर इज़ बिकॉज इज़ द ट्रस्ट वर्दी, और टीचर जो है वो हाईएस्ट पेड भी है और हाईएस्ट प्रोडक्टिव है, इस लेवल तक के दुनिया में फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को टॉप पे लेके आ गया, तो वो टीचर है। तो जब टीचर इतना कमिटेड है, इतना सिंसियरिटी के साथ काम कर रहा है, तो ये बता रहे थे कि जॉब छोड़ने का जो परसेंटेज है, उन्होंने कहा कि जो जॉब टीचर रैंक से निकल के दूसरी साइड पे जाने का, उन्हें कहा अमेरिका में ज़्यादा है, फिनलैंड में कम है। फिनलैंड वाले जो टीचिंग में आगे वो अपने आप को लास्ट तक उसी प्रोफेशन में रखते हैं, क्योंकि वहीं पे वो लर्न भी करते हैं और प्राइड भी फील करते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ हमारे दोस्त, मैं क्योंकि अभी आपको टाइम भी दे रहा हूँ, शायद मैं बाद में ये बातें कहूँगा। अच्छा, इसमें जो सवाल जवाब है, सवाल कुछ आप ही कर लें, मैं पहला करके मैं बैठता हूँ। मेरा सबसे पहले ये सवाल था कि जो मुझे इसमें नज़र नहीं आया कि हम ग्रेडिंग करते हैं स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग। अच्छा, यहाँ पे टेस्टिंग सिस्टम भी वीक है,
क्योंकि टेस्ट पर रिलाय नहीं करते, स्टूडेंट के माइंड पर रिलाय करते हैं, टीचर के असेसमेंट पर रिलाय करते हैं, जो रिजल्ट आता है उस पर रिलाय नहीं करते। खैर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दोस्त फिनलैंड में रहते हैं, वो फिन हैं खुद भी बाय नेशनलिटी, वहीं रहते हैं, हमारे भी हैं, यहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं। तो जो बच्चे हमारे जो चूज़ करते हैं फील्ड ऑफ स्टडी, जैसे हम इंजीनियरिंग चूज़ करते हैं, मेडिकल चूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स चूज़ करते हैं, बायोलॉजी चूज़ करते हैं, वॉट एवर द बॉटनी चूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, कंप्यूटर है, ब्ला ब्ला एक्स वाई जेड, या हम चूज़ करते हैं जो हमारे वो सिस्टम्स हैं जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, वो हम सिलेक्ट करते हैं, म्यूज़िक सिलेक्ट करते हैं, आर्ट करते हैं। तो हम बेसिकली या तो बच्चों को देखते हैं या उनके पेरेंट्स को देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से हम बच्चों को जो है ना प्राइमरी से लेकर वो अपने पेरेंट्स तो फॉलो कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं मेरे बच्चे को तो डॉक्टर ही बनना है, किसी और तरफ जाना नहीं, मेरे बच्चे को तो इंजीनियर बनना है, बस इसी में उनका जो है ना वो फिर बच्चे को उसी तरह माइंड सेट कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, उस पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो हमने ये बनाना है, मैंने तो ये डॉक्टर ही बनाना है। बहरहाल तो वो जो मेथड है बच्चों का फिनलैंड में वो क्या है, क्योंकि यह कहीं मुझे नज़र नहीं आया कि वो ये बता रहे हैं कि ये बच्चे खुद ही या उनके पेरेंट्स चूज़ करें, पर ये मेरा सवाल है। In Finland, nobody asks children to choose this or that, period. Absolutely nobody. It's the pupils, children who themselves decide. They are asked maybe in a subtle way, they are encouraged about one or the other, but ultimately they choose themselves. And in the beginning, in the 70s, the system was something similar to us, that already at the school level, you change, you decide, and then you cannot simply go from one to other. So you choose pre-engineering, pre-medical, arts, or whatever, but then at the university level, you cannot change. हुननि छा कयो, इनखे मटाए छॾियो, then they changed it. 80s में इसको तब्दील कर दिया। उसके बाद न सिर्फ ये कि आप किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन आप वोकेशनल और थियोरेटिकल ट्रेनिंग के भी मतलब उसमें फ़र्क में जा सकते हैं कि अगर आप 8वीं 9वीं 10वीं जमात में जो है आपने सोचा कि अब मैं टेक्निकल स्कूल में चला जाऊं, और उसके बाद आप सोचें कि नहीं मैं जाकर फ़लाँ सब्जेक्ट में मास्टर्स और पीएचडी करना चाहता हूं, आप कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप उस यूनिवर्सिटी जिसमें आप दाखिल होना चाहें उसकी टेस्ट पास करें, और जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसकी भी टेस्ट अच्छी तरह पास करें, आपको दाखिला दे देंगे और वो करेंगे। ये तो दिस वाज द आंसर टू द क्वेश्चन, बट few other points which I would like to suggest for consideration. Number one, education is completely free from class 1 to PhD. My son is now 26 years old. He has gone through all this schooling, and in August this year he will complete his PhD in artificial intelligence, computer sciences. And we didn't have to pay any fees for anything. Number two, during the school, when the children go to school, they get lunch in the school, and lunch is free. And the philosophy behind this is that everywhere in whole Finland, बिल्कुल देहात से लेकर बहुत बड़े शहर तक, स्कूलों में सर्विस एक जैसी है। उसमें ये फ़र्क हो सकता है कि शहर के स्कूल में ज़्यादा लोग हैं, इसलिए आपका एक्सपोजर ज़्यादा लोगों के साथ है, ताल्लुकात ज़्यादा लोगों से बनेंगे, दोस्तियां ज़्यादा होंगी, लेकिन स्टेट की तरफ से जो सर्विस आपको मुहैया की जाएगी वो एक जैसी होगी।
आप अमीर हैं या गरीब हैं, गैर मुल्की हैं या वहाँ के रहने वाले हैं, किसी भी सोशल, आपका रंग कौन सा भी है, आपकी ज़ुबान कौन सी भी है, आपको सबको एक जैसी तालीम मिलेगी, पीरियड। इस पर कोई डिस्कशन नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, शर साहब ने जिस तरह उसका जिक्र भी किया, फिनलैंड बायलिंगुअल कंट्री है, वहाँ पर 2 ज़ुबानें बोली जाती हैं, दोनों ज़ुबानें कौमी ज़ुबानें हैं, दोनों का रुतबा बराबर है। एक जो फिनिश है उसके बोलने वाले तकरीबन 87% लोग हैं और तकरीबन 12% लोग जो है वो स्वीडिश बोलने वाले हैं। इन दोनों ज़ुबानों के बोलने वालों को अपनी मादरी ज़ुबान में मुकम्मल तालीम दी जाती है, पीरियड। इस पर भी कोई बहस नहीं है। ये नहीं होता है, ये न थींदो आहे त जेकॾहिं मुंहिंजी ॿोली सिंधी आहे, मुंहिंजी मादरी ॿोली सिंधी आहे, त मूंखे चयो वञे न तूं अंग्रेज़ी में पढ़, उर्दू में पढ़, रूसी में पढ़, जर्मन में पढ़, फलाने में पढ़। ये नहीं होगा। अगर मेरी मादरी ज़ुबान उर्दू है तो वो कहें कि आपको जो है फ़लाँ 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 ज़ुबान में आपको पढ़ना होगा। नहीं, स्कूल की ज़ुबान मादरी ज़ुबान। स्पेशलाइज्ड स्कूल हैं, स्वीडिश ज़ुबान के अपने, फिनिश ज़ुबान के अपने, और जो बच्चे जिनकी मादरी ज़ुबान स्वीडिश है वो स्वीडिश वाले उसमें जाकर पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो फिनिश वाली साइड में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक को दोनों ज़ुबानें आती हैं और हर एक के लाजमी है कि दोनों ज़ुबानें सीखें। ज़ुबान का मसला जो है वो वहाँ पर इस तरह है, और वो बहुत ही डेमोक्रेटिकली हल करते हैं कि एक शहर की जो गलियों के नाम भी लिखे हैं, जेके घिटियुनि जा नाला बि लिखियल आहिनि, उहे ॿिन्ही ॿोलियुनि में लिखियल आहिनि। तव्हांजो पासपोर्ट, तव्हांजी आइडेंटिटी कार्ड, तव्हांजो का भी सरकारी दरख्वास्त, आप कोई भी एप्लीकेशन किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में जाकर देते हैं, दोनों ज़ुबानों में होती है। आप अगर एक जानते हैं तो आप उससे बिल्कुल गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों आम तौर पर आती हैं, हर एक सीखता है, वो कोई उसमें उस तरह का झगड़ा नहीं। उसके बाद भी आपको 2 और ज़ुबानें सीखनी होती हैं। You have to learn 2 more languages and you have to choose yourself. आम तौर पर अंग्रेज़ी भी चूज़ करते हैं बच्चे, लेकिन बहुत सारे बच्चे कोई जर्मन चूज़ करते हैं, कोई रशियन चूज़ करते हैं, कोई चाइनीज़ चूज़ करते हैं, कोई फ्रेंच चूज़ करते हैं। हर एक की मर्ज़ी है, जो जहाँ अवेलेबल हो, और इस तरह से ये ज़ुबान का उनका मसला इस तरह हल है। तीसरी जो बात कहूँ कि ये जो डॉक्टर वैगनर थे, ये अमेरिकन थे, इनका ये ख्याल था कि मैं मालूम करूं कि आखिर ये मुल्क जो छोटा सा मुल्क है, ये दूसरे अपने से ज़्यादा अमीर मुल्कों को क्यों आउट परफॉर्म करता है। शायद इस वजह से है कि वो पैसे जो है ज़्यादा खर्च करते हैं। इसको पता चला कि नहीं, पर स्टूडेंट खर्च जो है वो भी अमेरिकन से, जर्मन से, स्वीड से, नॉर्वेजियन से, इनके जो भी पड़ोस के मुल्क, अमीर मुल्क हैं, उनसे कम खर्च करते हैं, उसके बावजूद आउट परफॉर्म करते हैं। नंबर 2, साईं ने जिस तरह सुना, शायद थोड़ा गलत सुना, क्योंकि वहाँ के टीचर्स की तनख्वाहें भी अपने पड़ोस के मुल्कों की तनख्वाहों से कम हैं, उसके बावजूद वो आउट परफॉर्म करते हैं। तो ये एक यूनिक, और जिसको ये सरप्राइजिंग कहता है। क्यों सरप्राइजिंग है? कि ये पैसे डिटरमिन नहीं करते कि आप अच्छी तालीम किस तरह करें, पैसे डिटरमिन नहीं करते। पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, रिसोर्स के सिवा वो कैसे जो है वो मुफ्त में तालीम हर एक को देंगे। लेकिन मुफ्त में तालीम तो स्वीडन भी देता है, नॉर्वे भी देता है, जर्मनी भी देता है, बरतानिया भी देता है, सब देते हैं। क्यों इनको ये आउट परफॉर्म करते हैं? तो ये एक दूसरी सरप्राइजिंग चीज़ थी। फिर एक तीसरी चीज़ उस अमेरिकन के ख्याल में ये था, अमेरिकन थॉट दैट इफ़ देयर इज़ ट्रेड यूनियंस, द यूनियंस, टीचर्स यूनियंस, दे मस्ट बी crushed, there should be no unions, otherwise they are a big trouble, और वो जो है वो तालीम को ख़राब करती हैं। उसे पता चला कि नहीं, फिनलैंड की जो टीचर्स यूनियन है वो बेइंतहा पावरफुल है, उसके बगैर कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं हो सकती।
और वो उसका इनपुट लाजमी है किसी भी पॉलिसी मैटर में। इस वजह से उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। ये 3 गलतफहमियां इस डॉक्टर वैगनर साहब को थी, जो कि उससे मतलब कम से कम बहुत सारे लोगों के सामने ये थी पहले भी, और भी शायद अभी तक भी बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ये किस तरह है। इससे पहले कि मैं थोड़ा और आगे पढ़ूं, मुझे इल्म नहीं है कि आप लोग कितने वक्त तक जो है वो बैठे रहेंगे और कितना इंटरेस्ट होगा। एक और चीज़ बताऊं कि वो बाहर के स्टूडेंट्स को भी मुफ्त तालीम देते थे। मेरा एक भांजा है और एक भतीजा है, वो वहाँ पर पढ़ने आए, उन्होंने वहाँ दाखिला ले ली और एजुकेशन यूनिवर्सिटी की उन्होंने मुफ्त हासिल की। उसके बाद उन्होंने डिग्री हासिल की, वहीं पर वो अभी जॉब भी करते हैं और वो उन्होंने वो किया। लेकिन 2005 के करीब वहाँ पर पार्लियामेंट में एक प्रपोज़ल आया कि गैर मुल्कियों को हम क्यों मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। हम अपने मुल्क के लोगों को तो ज़रूर पढ़ाना चाहिए, अगर हम बाहर के लोगों को भी पढ़ाएंगे तो हमारी बजट कम हो जाएगी, हमें शॉर्टेज हो जाएगी पैसों की, तो हम क्यों इस तरह करें। तो हमारे जैसे जो लोग थे, जो प्रोग्रेसिव ख्यालात रखने वाले, उन्होंने वहाँ आर्गूमेंट पेश किया कि भाई थर्ड वर्ल्ड के गरीब मुल्कों के लोग हैं, इनको आप पढ़ाएंगे तो इससे डेवलपमेंट होगी दुनिया की, ये आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। तो एक ऐसी ही डिस्कशन में पार्लियामेंट का एक मेंबर था जिसको मैंने ये कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उसने मुझसे एक काउंटर सवाल पूछा, मुझे लाजवाब कर दिया। उसने पूछा कि भाई गरीब मुल्क कौन से हैं। मैंने कहा पाकिस्तान, इंडिया, चीन। अच्छा, उसने कहा ये 3 मुल्क जो कि एटम बम बनाते हैं लेकिन तालीम पर खर्च नहीं करते। आप हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि इनके शहरियों को हम मुफ्त में पढ़ाएं और ये खुद एटम बम बनाते फिरें, ये नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने वो लॉ तब्दील कर दिया और अब जो भी बाहर से लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं तीसरी दुनिया से, तो उनको फ़ी भरनी पड़ती है। वो फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि वो अच्छी खासी होती है। हमारे इधर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी खासी बन जाती है। I want to ask a question that, as we saw in the documentary, that they are paying more attention into training students and teachers, like they are like working on their trainings. This phenomenon, this school of thought, we are missing over here. We pay less attention to that. We pay less attention in training students also, vocational training or the training, and in teachers also. We pay less attention to skill them, provide them basic education or highly education. There is a huge amount of fees charged in abroad for PhD and masters. The people who are revolutionary people, but their problem is that they can't pay that fee and they can't study again. Is there any solution for that? मुझे इल्म नहीं है कि यहाँ पर इसका सलूशन क्या होगा, सवाए इसके कि तालीम पर ख़र्चा बढ़ाया जाए, और तो कोई तरीका है नहीं। और ये आप सब पर डिपेंडेंट है कि आप जिसको वोट दें या जिसकी हिमायत करें, जो इक़्तिदार में आए उनको फोर्स करें कि वो अपने वो कंडीशंस चेंज करें। लेकिन ये ट्रेनिंग का सिस्टम यहाँ पर भी है और दूसरे बहुत मुल्कों में भी है, लेकिन फिनलैंड में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव सिस्टम है और इस इफ़ेक्टिव सिस्टम का रिज़ल्ट जो है वो हम सब के सामने। दिस चेंज ऑफ प्रोफेशन इज़ मच वाइडर इन द US because initially people who choose to be teachers, they are only looking for some job, not that they are interested in teaching. In Finland, they are filtered very much. As the lady told you, in the academy or the pedagogy faculty where they were doing this teacher training and higher education for in the field of pedagogy, out of 1,600 applicants, they took only 160 in 1 year. So it's a very huge number. Here, perhaps 1,000 will go for medicine, and I don't know how many will be accepted. But in Finland, it's
It's highly motivated. That's why they stay on. And then their conditions are also kept good because the municipalities are the ones responsible for schools, not the federal or the central government. And the municipalities spend a lot, and they also charge a lot of tax. It's not without taxing. I mean, for example, I pay 16% tax to the municipality and about 10% to the federal government. So 16%, 26% of my income as any worker, it goes to in the tax, and they spend it for this. So this is the difference.